प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज। पहले की क्लास में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ सी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट, वेरिएबल सेट्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज फंडामेंटल्स, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स, keywords, data types, constants and variables, statements, expressions, operator, precedence of operators, input, output, assignments, control structure, decision making and branching। इसमें हम फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। उसमें कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और इनके बारे में हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इसको कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्या यूज़ है। सी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कैरेक्टर सेट के बारे में। अ कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स एंड some special characters that are valid in C language। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टर सेट किस तरह से अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स का हम यूज़ सी लैंग्वेज में करते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट विथ स्पेस इसके अंतर्गत आते हैं। The Sky American Standard Code for Information Interchange value of the lowercase alphabet is from 97 to 122 and the Sky value of the uppercase alphabet is from 65 to 90 if the Sky value of the character integer by the user lies in the range of 97 to 122 or from 65 to 90, that number is an alphabet. Given example, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, हम जो नंबर्स देते हैं या फिर डिजिट्स देते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z होते हैं हमारे, जिनकी स्काई वैल्यू नीचे मेंशन है। डिजिट्स, द स्टैंडर्ड इंटीजर्स नंबर्स, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। Likewise, the range for the DEC values for numerical digit is 47 to 57 DEC। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थात जो हम 0 से 9 तक जो डिजिट इनपुट देते हैं, इसमें लेते हैं, उनकी स्काई वैल्यू 47 से स्टार्ट होकर 57 तक होती है, जो कि नीचे एग्जाम्पल में पता है। जैसे 0 की वैल्यू 47 है, इसी तरह 9 की स्काई वैल्यू 57 है। Special symbols, all queries key symbols other than alphabets and Arabic's numerical are special symbols in C. For example, the hash and equal to asterisk etc.
These all have a special meaning as per their definitions in the C character set and syntax. For example, this with space. With space in C, with space refer to space, tabs and new lines. Returns a non-zero values if C is a with space characters. In a sky, with space character are space, tabs, carriage return, new line, vertebral tabs and feeds. इस विथ स्पेस का यूज़ हम स्पेस देने के लिए या स्लैश टी करके कैरेज रिटर्न करने के लिए या टैब देने के लिए, स्लैश आर कैरेज रिटर्न करने के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश भी वर्टिकल टैब के लिए आदि का यूज़ करते हैं. Variables. C variables is a named location in a memory where a program can manipulate the data. This location is used to hold the value of the variable. The value of the C variable may get changed in the program. C variable might be belonging to any of the data type like int, float, character, etc. Example: int n equal to 10, character v equal to a. Variable names n, v. Constants. Constants in C are the fixed values that are used in a program and its value remains the same during the entire execution of the program. Constants are also called literals. Constants can be any of the data types. It is considered best practice to define constants using only uppercase names. Type of constants in C language: character constants, integer constant, real constant, string constants and logical constants. सी प्रोग्रामिंग में कई तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसमें से कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग और लॉजिकल हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. कैरेक्टर constants. C supports some character constants having a backslash in front of it. The list of backslash character constant have a specific meaning which is known to the compiler. For example, this. Integer constants. In integer constants must have a list 1 digits, no commas or blanks are allowed within a integer constants. If no sign precedes an integer constant, it is assumed to be a positive. The allowable
range for integer constant is -32768 to 32767. Decimal. An integer constant is a decimal based 10, octal based 8, or hexadecimal based 16. Number that represent an integral value using integer constants to pre- represent integer value that cannot be changed. For example, 12, 13, 0, 1, 1100. Octal. The number system based on 8 is called octal and use the digit 0 through 7 because these two number system are used frequently. C allows used to specify integer constants in hexadecimal or octal instead of decimal. Hexadecimal constants must consist of ox followed by constants in hexadecimal form. Hexadecimal. C allows use to specify integer constants in hexadecimal or octal instead of decimal. A hexadecimal constants must consist of an ox followed by the constants in hexadecimal form. And octal constants beings with a 0. Here are two. For example, int hexa equal to 0 multiply 40 in decimal 64. The real constant, a real constant is combination of a whole number followed by a decimal point and the fractional part. For example, 0.0083 comma minus 0.75. String constant. String is sequence of characters. String constant is written in pair of double square. String is declared as array of characters in C. String data type is not available. For example, double inverted comma ABC. Logical constants only have two legal values, true and false. 0 is used to represent false and 1 is used to represent true. Keywords. A keyword is a reserved word. You cannot use it as a variable name, constant name, etc. There are only 32 reserved keywords in the C language. C. These are 32 keywords. Data type. A data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, follows, character, etc. Data type primary and secondary. Primary is integer, character, float, double, void. Secondary array, string, structure, यूनियन. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोग्राम्स. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करके
हमसे बात कर सकते हैं।